हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री अरविंदो घोष के बारे में। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो जैसे कि आप जानते ही हैं इनको, है ना। ये देखो, एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे, है ना, who had burned onto the scene in the last quarter of 19th century, and he also shows renaissance of Hindu's philosophy. इनके जो आइडियाज थे, आइडियाज वर बेस्ड ऑन वेदांता। ओके, सो इनके जो आइडियाज थे वो वेदांता पे बिलोंग करते थे, और साथ ही साथ इनके जो बहुत सारे, मतलब आप इनके बारे में कहो तो मतलब कम ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो इनका जो मानना था ना, वो मॉडरेट से बहुत अलग था। जैसे अगर हम डिवाइडेड देखें हम फाइव फेजेस में, तो फर्स्ट फेज था ना, who was a great naturalist, एंड सेकंड फेज में हम देखें तो मैसेज एज अ ग्रेट सेज, है ना। जैसे इन्होंने काउंटर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू द थॉट एंड ब्रोकन नेशनलिज्म फ्रॉम पीपल्स। ओके, जब अ, जो वो ब्रिटिश जब चाह रहे थे कि इनमें जो कम्युनिटी है वो टूटी रहे, सो दैट कि हमारा रूल चलता रहे। ओके, तो उन्होंने इसको काउंटर किया था, ब्रिटिश के थॉट्स को, ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, है ना, बचाया भी था। एंड स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट, जो स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट थे ना, मन में जो नेशनलिस्ट का भाव, तो वो सारी चीजों को तोड़ने से इन्होंने काउंटर भी, मतलब बचाया भी था। वो चाहते भी थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश के इनके बीच में ये सारी चीजें ना हो। रेज टू रूट्स ऑफ नेशनल स्पिरिचुअलिटी, है ना। हम यहाँ से हम रूट्स को, हम जो नेशनलिज्म है ना, उसके हम ट्रेस कर सकते हैं। एंड देखो, ही गेव आइडिया ऑफ इंडिया, गॉड, रिलीजियस, मिस्टिकल अप्रोच, है ना। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी और बोला था, बताया था इसके बारे में। ओके, ये इंडिया इज एन रिलीजियस एंड मिस्टिकल अप्रोच। ओके, एंड ऑल्सो फेसिस ऑफ अरविंद घोष, अगर हम देखें, फर्स्ट फेज था रिवॉल्यूशनरी था, मिलिटेंट नेशनलिस्ट था, और हम इसे टॉक अबाउट कंप्लीट स्वराज। ओके, देन सेकंड फेज में हम देखें तो देखो, स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड होना, है ना, देन स्पिरिचुअली नेशनलिज्म होना, इसके बारे में बात किया उन्होंने। और ऑन द एविल इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के जो एविल इफेक्ट थे, उसमें हम बात करें तो ब्रिटिश हैज क्रश्ड सोल ऑफ इंडिया। ओके, एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड नेशन बना दिया गया था, टर्न इनटू डेड हाउस ऑफ द फेमस माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीजें अपनी कंट्री हो गई थी। तब जो इनके थॉट्स है ना, उसने काम किया था रिजुविनेशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड क्रिटिक ऑफ मॉडरेट्स इन इंडिया, अगर हम देखें तो इन्होंने इंदु प्रकाश में ना, न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड, फॉर ओल्ड, है ना, उन्होंने अपने थॉट्स जाहिर करे इसके बारे में। उन्होंने देखो बताया कि सेवनली क्रिटिसाइज किया उन्होंने मॉडरेट्स को, क्योंकि उनका बिहेवियर है ना, प्रेयर पिटिशन करने का ब्रिटिश के सामने, मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं, और हमें ये इसमें आप ऐसे इसमें सीट दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, पर क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना मॉडरेट्स को। तो इसी वजह से 1885 से लेकर 1905 जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं। इस वजह से ना थोड़ा और ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। एंड आईएनसी सीजन, जैसे उनका जो ग्रेट 3 डेज तमाशा हुआ करता था हिल स्टेशन पे, 1 ईयर में, तो उसमें कुछ नहीं, बस बिल वगैरह हुए, वो सारी चीजें हुए और कुछ नहीं, फिर उसके बाद सब बैठ गए। तो यही सारी चीजों पे ना उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अब घोष ऑन स्वराज, देखो, अरविंद घोष, तो स्वराज के बारे में इनका कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था इनको। एंड जैसे ऑन द लिंक लाइन ऑफ यूके, जैसे यूके में है, एंड पावर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, वैसे इंडिया को होनी चाहिए पावर, अपने पास होनी चाहिए। एंड मॉडर्न सफरिंग, मतलब सफर कर रहे थे। देन अनेबल टू सी ब्रिटिश एज अ कर्स, मतलब उनका जो वो जो श्राप दिया हुआ था उनको नहीं देख पा रहे थे, और साथ ही अगर हम देखें कि वो कैसे खोखला कर रहे थे, है ना, तो वो सारी चीजें नहीं देख पा रहे थे। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड डिवाइड एंड रूल आल्सो, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन रिलीजियस मिस्टिकल अप्रोच, स्पिरिचुअलिटी, यूनिटी होनी चाहिए मैनकाइंड में, वननेस ऑफ इंडियन थॉट थ्रू स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, देन ब्रिटिश प्रोपोगेंडा अगर हम देखें, उनका था डिवाइड एंड रूल, उसको भी काउंटर करने की कोशिश किया था। और कहाँ तक, एंड इन्फ्लुएंस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, आपने सुना होगा बंगाल में। सो अगर हम बात करें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अरविंदो घोष के बारे में, तो देखो, ही वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग रिलीजियस मिस्टिकल अप्रोच टू नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड अरविंदो घोष provided radical content to India nationalism. He burst.
on the scene in the last quarter of the 19th century, and he went on become a great exponent of Indian philosophy. So, in his brief political career, Aurobindo Ghosh deepened the concept of spiritual nationalism, and that is roots of nationalism are can be traced through the spiritual integration of Indians. Then political in the ideas of Aurobindo Ghosh. That first phase इनका revolutionary रहा था, okay, militant nationalist रहते हैं, talk about complete Swaraj, spiritual unity है ना, and then spiritual nationalism के बारे में बात किया करते थे. First phase, he developed the theory of passive resistance and gave the concept of Indian nationalism. Second phase में great sage of India then, and as he wrote extensively about the ideal of humanity, human unity, and essential characteristics of Indian model of state building. Then thus, Aurobindo Ghosh, as a militant nationalist, was eager to liberate India from the British rule. In the second phase, he gave the message of a spiritual unity of mankind as a great, and he also gave the message of the spiritual nationalism. So, Sri Aurobindo on evil effect of British. Aurobindo Ghosh was a critic of British rule in India, and he was militant nationalist in the first part of his career. And according to him, British rule was has crushed the soul of India. And Arvind Ghosh did not agree with the moderate that rule in a blessing this case. And according to the Arvind Ghosh, British rule was a curse of majority of Indian people. है ना एक श्राप था majority अगर हम देखें तो British rule and because British rule had ruined the Indian philosophy and did not allow the Indian economy है ना to develop. Then British rule disorganized Indian into the crown. You know, Indian industry and trade were ruined and agriculture devastated. Then the British government in India was the worst type of bureaucrats, nepotism, motivated by the plunder and domination. According to the Arvindo Ghosh, the spirit of India and freed only by the securing complete independence of country. Then freedom from foreign rule was inalienable rights of people. Okay. Then critic of moderates in India. He wrote a series of articles in Hindu Prakash, okay, and under the title New Lamp of for Old, okay, severely criticized the politics of petitions, prayers of the moderate leaders. He said that Congress leaders lack the spirit of sincerity, hardness, right type of methods and right type of leaders. Because when we blind lead to blind both were found to fall in the ditch. Then complete change in the polity of Congress party because under the moderate leadership, the Congress confused suffrage with freedom in favor of foreign depotism with the citizen rights. Then Arvind Ghosh and Suraj. Suraj means complete interdependence, okay, independence, because Aurobindo Ghosh argued that political agitation was not launched to secure few seats in bureaucracy in assembly, but secure right of self-government and to the people. So, writing about the Swaraj in Vande Mataram, Shri Aurobindo wrote, "We of the new school would not pitch our an ideal, one pitch lower than absolute Swaraj, self-government as it exists in the UK. So, to thrive or for anything else, Suraj, he argued, would be insult of greatness of our past and magnificent possibility of our future." Okay, so ये हमारी इंसल्ट हो सकती है डेट कि हम स्वराज से नीचे कुछ लें और मैग्निफिकेंट कर सकते पॉसिबिलिटी ऑफ अवर फ्यूचर ऑल्सो. सो Arvindo Ghosh considered idea of Swaraj in national education inseparable from each other. His idea of national education include the element of inheritance of the past and widening gains of present and the large potential of the future. So Arvindo Ghosh's idea of nationalism, अगर हम देखें तो श्री Arvindo Ghosh is considered as a prophet of Indian nationalism. His theory of nationalism was based upon Vedantic philosophy, which advocates oneness and unity in the man and God. So Arvindo concept of the nation was deeply influenced by the Bankim Chatterjee and greatly Bengali novelist. He believed that nation
is not just a piece of land, nor a figure of speech, nor a mass of human, nor a figment of one's imagination. That is not a creation or mind. According to the Arvindo Ghosh, India is mighty Shakti composed of billions of Shaktis, and he called India as a divine entity. That is Bharat Mata. Okay, so thus his concept of nation is profound, very different from the commonly held patriotic notion about the nation. Arvindo Ghosh argued that colonies masters have challenged the identity of India, of a nation, and according to them, India is not a notion, and it is nothing more than the geographical expression. Arvindo Ghosh held that it is relevant to understand Indian nationalism through the Western ideas put forward by the colonies master. Then Arvindo Ghosh also said that we need to look historical process which is taking place within India in order to understand nationalism. And moderates are also unable to see the spirit of nationalism among the youth and meet the spirit, and we need to hold theory of nationalism. So अरविंदो घोष के ये आइडिया थे, है ना? उनके थॉट्स के बारे में हमने आज जाना। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।